स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर रीना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। आज मैं आपको पर्किन रिएक्शन पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. It is generally asked in many exams, so learn it carefully. Okay. Hello students, welcome in my online channel that is Fun Chemistry by Reena. Today we are going to read about Perkin reaction. This is the portion of Organic Chemistry MSc Semester 1 Unit 6. It is very important reaction from exam point of view. Any exam, whether it is IIT, whether it is NET, whether it is CSIR NET, any exam, it is very important reaction. तो इसको अच्छे से समझेंगे. Perkin reaction. This reaction comprises in the interaction of an aromatic aldehyde. We can take benzaldehyde in the place of aromatic aldehyde. It will interact with an aliphatic acid anhydride containing hydrogen atom having alpha hydrogen at the alpha carbon atom in the presence of sodium salt of the corresponding carboxylic acid to produce an alpha beta unsaturated acid. देखिए इसमें दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं. पहले तो एरोमेटिक अल्डेहाइड, वी कैन टेक इन द प्लेस ऑफ एरोमेटिक अल्डेहाइड बेंजल्डेहाइड. दिस विल इंटरैक्ट विथ aliphatic acid anhydride. In aliphatic acid anhydride there should be alpha carbon, and as we know that alpha carbon can contain alpha hydrogen, but it is not necessary, but somewhere alpha carbon contain alpha hydrogen. So aromatic aldehyde will interact with aliphatic acid anhydride. This reaction will happen in the presence of sodium salt of corresponding carboxylic acid. Whatever we will take carboxylic acid, there should be of salt of sodium to produce alpha beta unsaturated acid. This will produce alpha beta unsaturated acid. The result will be alpha beta unsaturated acid. The product will be alpha beta unsaturated acid. Now, as we have taken in the place of aromatic aldehyde benzaldehyde, you will see here this is benzaldehyde. Okay, this is reacting with acid anhydride. This is the formula of acid anhydride. CH3 C double bond O, single bond O, single bond C double bond O, single bond CH3. Here you can see alpha carbon and alpha carbon having alpha hydrogen. Here is alpha carbon having alpha hydrogen. This both react with in the presence of corresponding salt of acetic acid. So corresponding salt of acetic acid is sodium acetate. Here you can see the formula of sodium acetate, CH3 COO Na. Okay. This will react up at the temperature of 180 degree for 5 to 6 hours. After the reaction, the cinnamic acid will form. Cinnamic acid means product will be alpha beta unsaturated acid. You can see here alpha beta unsaturated acid, and it will also give acetic acid. Means in final product we have to get cinnamic acid, where aromatic aldehyde will react with any aliphatic acid anhydride, that is acetic acid or acetic anhydride, we can take anyone, to form cinnamic acid. Okay. Now on the place of acetic anhydride we can also take propionic anhydride. Benzaldehyde is the same compound which I have taken in first reaction. Second reaction, benzaldehyde will react with propionic anhydride. Here above I have written the same formula, and this propionic anhydride is written in expanded form. This will react with corresponding salt of propionic acid. Whatever we will take acid anhydride, that will be here, that will be their salt, corresponding salt. If we are taking acid anhydride, then we have to take its corresponding salt, that is sodium acetate. If we are taking propionic anhydride, then again we have to take the corresponding salt of propionic acid. Again the temperature will be 180 degree, and it will be 5 to 6 hours in reaction. Then we will get alpha methyl cinnamic acid. This product is alpha methyl cinnamic acid, and in addition it will also give propionic acid. Here what we are getting? Acetic acid. Acetic anhydride react with benzaldehyde to give cinnamic acid and acetic acid. Here we are getting
benzaldehyde with propionic acid, propionic anhydride, and it will give propionic acid. Now see, anhydride of aliphatic acid, whatever we are taking anhydride, then we will see about anhydride of acetic acid. When two molecule of acetic acid interact, when जब दो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो इट लॉसेज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर वहाँ से एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, इट गिव्स एन एनहाइड्राइड दैट इज एसिटिक एसिड, वो एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करता है जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं. देखिए एसिड एनहाइड्राइड कैसे निकालते हैं. यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया है मैंने दो मॉलिक्यूल और एक से मैंने हाइड्रोजन ले रखा है और एक से एक मॉलिक्यूल से HO. So this H and OH will combine together and it will come out as a H2O. वाटर निकल जाएगा गर्म होने पे और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा. सेम फार्मूला आई हैव रिटेन इन एक्सपेंडेड फॉर्म हियर बिलो. ओके, if we take propionic acid then we have to take two molecule of propionic acid. It will lose a molecule of water and it will give anhydride. Anhydride means होता है निर्जलीय, जिसमें जल नहीं मौजूद हो. इसलिए जब दो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनिक एसिड या एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो वहाँ से वाटर निकल जा रहा है ताकि ये एनहाइड्राइड दे सके, यानी निर्जलीय प्रोपियोनिक एसिड दे सके. यहाँ भी देखिए, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा. आइदर यहाँ से OH निकालिए या फिर यहाँ से H निकालिए. टू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपियोनिक एसिड हैज़ बीन टेकन. इट विल व्हेन इट विल बी हॉट और इट विल बी वार्म, H2O will come out and then we will get propionic anhydride. प्रोपियोनिक एसिड से वाटर निकल के प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा. सेम फार्मूला आई हैव रिटेन बिलो. अब इसका मैकेनिज्म शुरू होता है कि हमको फाइनली पर्किन रिएक्शन में पाना क्या है. तो हमको फाइनली पर्किन रिएक्शन में सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोडियम एसीटेट लेंगे, डैट विल फर्नेस एसीटेट आयन. सोडियम एसीटेट से एसीटेट आयन निकल जाएगा. See here, sodium acetate I have taken and O and Na means oxygen and sodium will break and oxygen will get minus charge and sodium will get plus charge. So this will become acetate ion. It will break in acetate ion. This is the first step. In second step, whatever we get acetate ion is sufficient strong to pull an acidic proton फ्रॉम अल्फ़ा पोजिशन ऑफ एन एनहाइड्राइड. हम लोग एनहाइड्राइड बना के रखे हुए हैं, अलग से देखा था हम लोगों ने कि एनहाइड्राइड कैसे बनता है. वाटर निकल जाता है जब वार्म करते हैं वाटर तो हम लोग एनहाइड्राइड बना के रखे हुए थे. एसिटिक एनहाइड्राइड बना के रखे हुए थे या फिर प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड पहले से बना के रखे हुए थे. एसिटिक एसिड से वाटर निकाल करके उसको वार्म कर करके एसिटिक एनहाइड्राइड निकाल के रखे थे. अब हमने फर्स्ट स्टेप में एसिटेट आयन का फॉर्मेशन किया. अब एसिटेट आयन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ है कि एसिटेट एनहाइड्राइड से प्रोटॉन को अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन को निकाल सकें. नाउ एसिटेट आयन, सोडियम एसिटेट will combine with H plus of acetic anhydride. This will combine with then it will form carbon ion. Then it will product will be carbon ion. You can see here. This is the product. This will be the product CH2 C double bond O CH3. यहाँ से reactant में देखिए O having minus charge and hydrogen having plus charge. Then O will take the proton, acidic proton of acetic anhydride from alpha position. This is the where acetic anhydride where hydrogen is H plus is the position of alpha position. So OH will take the proton or O will take the proton of acetic anhydride and form acetic acid. You can see in the product side the second product is acetic acid. This will come from sodium acetate when combined with hydrogen. And rest of the product which we have found is then CH2 will have gain minus sign. So it will be carbon ion. So final product we are getting carbon ion plus acetic acid. Okay. In third step this carbon ion will carry on in third step. This carbon ion attack the carbonyl carbon or atom of C6H5CHOC aromatic benzaldehyde के carbon ion attack on carbonyl compound of C6H5CHOC aromatic aldehyde के benzaldehyde पे attack करेगा to produce anion. Here you can see carbon ion is attacking on benzaldehyde and here you can see the structure of benzene having group of aldehyde
So it is benzaldehyde. You can see the substrate part. In the reactant portion of substrate part, you can see benzaldehyde. Okay. Then carbon ion will attack on carbon, and you can see in the structure of benzaldehyde, carbon and oxygen having double bond. Oxygen have more negative charge, so oxygen will take the one electron bond, pi electron on oxygen minus, it will gain minus, and carbon will lose electron, so it will be plus. Now carbon ion is strong enough to attack on benzaldehyde, which is now as a carbocation. So carbon ion will attack on carbocation, both combined together to form anion. Here in the product you can see it has formed anion. Now this anion will carry on in the next step of the 4 reaction. The anion take up proton from solvent water. ये anion जो है वाटर जो मौजूद है रिएक्शन में उससे वाटर ले लेगा और ये हाइड्रोक्सी एसिड एंड हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा. सी ऑक्सीजन हैव anion have oxygen minus charge, it will take the H plus from the system and it will form OH, hydroxy acid anhydride. In product you can see hydroxy acid anhydride. Now this hydroxy acid anhydride will carry on in the 5th step of the reaction. The above compound eliminate a water molecule under the reaction temperature to form unsaturated mixed anhydride. ये जो हमको मिला है hydroxy acid anhydride in the reaction step 5, you can see the reactant side. This here from here water will come out. यहाँ से वाटर निकल जाएगा. वाटर निकलने के बाद you can see minus H2O. This will give mixed anhydride. एनहाइड्राइड मीन्स निर्जलीय, जिसमें जल की मौजूदगी नहीं होती है. एंड इन फाइनल स्टेप दिस मिक्स एनहाइड्राइड will break up. Mix anhydride undergo hydrolysis to produce cinnamic acid. It will go in hydrolysis process and it will give cinnamic acid and then acetic acid. Okay, acetic acid. So finally we form the product as a cinnamic acid. We have started to, from first reaction we have combination with, we have read that aromatic aldehyde with an aliphatic acid anhydride in the presence of sodium salt or corresponding salt to produce alpha beta unsaturated acid. So finally we got cinnamic acid from the product. Here you can see in the last step we have got cinnamic acid and acetic acid. Thank you so much.